Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janava Nava Girivaradhari Yasoda Nandana Raghunatha Rajana Yamuna Tira Vanachari Ayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Yasoda Nandana Vraja Jana Rajano Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tero Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Yasoda Nandana Vraja Jana Rajana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gauranga Jaya Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gauranga Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayet Sri Chaitanya Manovistam Stapitanya Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadatyeva Padamtikam Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sagana Raghunatam Vitantam Sashivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarubhya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. $25 is there. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 19, Kigyayati Achieve Liberation. We read today the text 25. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Adhyaya 19, Kigyayati ko mukti labh, Shlok क्रमांक 25. We start by the word in Sanskrit. If you want to repeat, Saha, Tatra, Nirmukta, Samasta Sangaha, Atmanuvutya, Viduta, Trilingaha, Pare, Amale, Brahmani, Vasudeve, Leve, Gatim, Bhagavatim, Pratitaha, Satatra Nirmukta Samasta Sangam, Amanovutya Viduta Trilingam, Paremala Brahmani Vasudeve, Devegatim Bhagavatim Pratitaham, Satatra Nirmukta Samasta Sangha, Atmanuvutiya Viduta Trilinga, Paremala Brahmani Vasudeve, Levegatim Bhagavatim Pratitaham, Satatra Nirmukta Samasta Sangha, Atmanuvutya Viduta Trilinga,
Pare Malabrahmani Vasudeve Lebe Gatim Bhagavatim Pratitaha Someone else? Mataji's. Saha Maharaja Ayati Tatra upon doing this Nirmukta was immediately liberated from Samasta Sangha, all contamination was cleaned off. Trilingha, the contamination caused by the three moods of material nature, Sattva Guna, Rajoguna, Tamaguna. प्रकृति के तीन गुणों सत्व रजस तमो से उत्पन्न कल्मश Pare undo de transcendence. Amale, without material contact.
Brahmani, ब्रह्मणि the Supreme Lord Vasudeva. परमेश्वर Excuse me. Vasudeva, वासुदेव Vasudeva Krishna, the absolute true Bhagavan. भगवान वासुदेव परम सत्य में Leve ये Ashivat, प्राप्त किया Gatim, गति the destination, लक्ष्य Bhagavatim, भागवती as an associate of the Supreme Personality of Godhead, भगवान के पार्षद के रूप में Pratita, मैंने कहा famous. सुप्रसिद्ध Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Because King Yayati completely surrendered unto the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, he was free from all contamination of the material nature, mood of nature. Because of his self-realization, he was able to fix his mind upon the transcendence, Parabrahman Vasudeva, and thus he ultimately achieved the position of an associate of the Lord. क्योंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था। अतएव वे भौतिक प्रकृति के गुणों के सारे कल्मश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को परब्रह्म वासुदेव में स्थित कर सके और इस प्रकार अंततः उन्हें भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। So King Yayati was completely surrendered unto the Supreme Personality of Godhead. राजा ययाति पूर्ण रूप से भगवान के चरण में आश्रित थे। Completely surrendered when one fixes the mind in Vasudeva. पूर्ण शरणागति का मतलब है कि मन को पूर्ण रूप से भगवान वासुदेव के चरण में लगाना। Yeah, this is completely surrendered because there is no any more guna influence. उस अवस्था में कोई भी गुणों के प्रभाव नहीं होते। With guna influence, we cannot fix completely. We cannot surrender completely. जब तक तीन गुणों का प्रभाव है, पूर्ण रूप से व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। Must to be nirguna. व्यक्ति को निर्गुण अवस्था प्राप्त है। This atmosphere is in the temple, nirguna. मंदिर में जो स्थिति है वो निर्गुण अवस्था होता है। That don't means everyone is in nirguna, but the atmosphere in the temple is nirguna. मतलब नहीं है कोई चीज मुक्त हो गए गुणों से, किंतु वातावरण मंदिर का ये गुणों से परे होता है। Satvaguna is in the jungle. जंगल में सत्वगुण का वातावरण। For that, the sage go to meditate in the jungle because there is sattva guna. इसलिए ऋषि मुनि जंगल में जाते हैं ध्यान करने के लिए, क्योंकि वहाँ सत्वगुण का वातावरण। It's more auspicious, it's more favorable. वो ज़्यादा अनुकूल है। But it's superior in the temple because in the temple is nirguna. किंतु मंदिर जो है वो जंगल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये निर्गुण अवस्था है, सत्वगुण से भी परे है। Many people come in the temple but then don't know here is this nirguna. बहुत लोग मंदिर में आते हैं किंतु उनको इस विषय में ज्ञान नहीं है कि And then feel some peaceful. Then understand maybe why, but then feel peaceful. Some people after work all day then come and sitting here, maybe don't chanting, but he feels this nirguna atmosphere, even if he don't know. जो बाहर में काम करने वाले जैसे यहाँ आते हैं उनको एक मन का शांति प्राप्त होता है।
Yeah. तो पता नहीं है ये क्या है, किंतु उनको ऐसा अनुभव होता है कि मन शांत होते हैं। And you go out immediately there on the road, there is Rajoguna. जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं और रोड पे खड़े हो जाते हैं तो वहाँ रजोगुण की अनुभव होता है। And Tamasguna is the place where there is prostitution, alcohol. और तमोगुणी जगह वहाँ है जहाँ पाप कर्म जैसे मांसाहार, जुआ, शराब इत्यादि। In the purport, Srila Prabhupada say the word viduta meaning cleansed. This word is very significant. यहाँ तात्पर्य में इसका प्रॉपर कहते हैं विदुत शब्द स्वच्छ, ये बहुत महत्वपूर्ण। Yeah. In this situation, one can really enjoy, even in the material world, enjoy. तो इस अवस्था में वास्तव में व्यक्ति आनंद का अनुभूति कर सकता है, भौतिक जगत में नहीं रहते हुए। Srila Prabhupada say the problem of materialista, they want to enjoy, but they don't know how to enjoy. भौतिक जगत में भौतिकवादियों का समस्या है कि वो सुख भोगना चाहते हैं, किंतु कैसे सुख प्राप्त किया जाए उनको पता नहीं। Yeah, so then try sense gratification in material situation and never can get. भौतिक स्तर पे रहते हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, किंतु वो कभी भी वो प्राप्त नहीं करते। But more purify is the person, the consciousness. More purify is the consciousness. More you enjoy everything, even the air, the perfume, the air, the colors, everything. जितना व्यक्ति शुद्ध, जिसका चेतना शुद्ध होता है, उतना ही वो ज्यादा श्रेष्ठ सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों का सुख जैसे हवा का जो गंध है और इत्यादि, भौतिक जगत का भी जो सुख है वो जितना उसका चेतना शुद्ध है तो The perception is different. More you pure become, more nice is the perception. इंद्रियों का जो अनुभूति है वो जितना इंद्रिय हमारे शुद्ध रहेंगे उतना उसका अनुभूति श्रेष्ठ रहेगी। Everyone in this material world is contaminated. Karana guna sangosya. भौतिक जगत में सब लोग दूषित है, कारण गुण संगोष्ठ। Because we are in material condition, we are contaminated either by sattva guna, by rajoguna, or by tamaguna. क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं, इसलिए हम सत्व, रजो, तत्व, तमोगुणों में दूषित हैं। In sattva guna we find some happiness. Yeah, because we get some knowledge, realization of knowledge. So we get some happiness in sattva guna. But in rajoguna there is suffering. Because in rajoguna, by the influence of rajoguna, we get attachments, material attachment. More intensive is this attachment, more strong is the suffering. Unfortunately, in this Kali Yuga, in the world, there is more than 99% of people are influenced by the Rajan Tamas. And Tamas Guna, down the influence of Tamas Guna, one don't understand what to do and what not to do.
की अवस्था में व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। क्या करता है क्या करना है Even if one become a qualified brahmana, the mood of goodness, sattvaguna, he is still materially contaminated. अगर व्यक्ति ब्राह्मण भी हो जाता है फिर भी वो सत्वगुण से दूषित करता है। One must come to the platform of Shuddha Sattva, transcending the Sattva guna. तो व्यक्ति को शुद्ध सत्व के स्तर पे आना है जो सत्वगुण से भी परे है। Yeah, in this level is one find the really liberation. उस स्थिति में व्यक्ति वास्तव में मुक्ति को अनुभव करता है। Vishuddha Sattva. शुद्ध सत्व। Then one Viduta Trilingam, cleaner of the contamination caused by the three mood of material nature. उस अवस्था में व्यक्ति को विद्युत त्रिलिंगम तीन गुणों से परे माना जाता है। And this is possible by the mercy of Krishna. और ये केवल भगवान कृष्ण की कृपा से संभव है। Everything is possible with the mercy of Krishna. Everything. भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। We see the example Srila Prabhupada. He got strong faith, and he went to America with nothing, practically 2-3 sets, nothing else. व्यवहारिक रूप से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के जीवनी में वो अमेरिका गए थे बिल्कुल खाली हाथ के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे और कुछ नहीं। Yeah, but he got faith in the he will get the superior help. किंतु उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनको मदद करेंगे। And he found so many difficulties, even to have one place to stay, to sleep, got difficulties. उनको बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। केवल एक सोने के लिए जगह, रहने के लिए जगह भी प्राप्त होना उनके लिए बहुत कठिन था। But Krishna don't leave him alone. He start to send helper. कृष्ण उनको ऐसे ही त्याग छोड़े नहीं, उनको मदद के लिए कई सारे भक्तों को भेजा। And that bhakto he start to understand more and more, and then help even to translate, to print. तो धीरे-धीरे नए भक्त भक्ति में आगे बढ़ते गए और प्रभुपाद को ग्रंथ छपाई में भी उन्होंने मदद किया। This we call that superior help. ये जो है ऊपर से भगवान की प्रेरणा से ही सहायता प्राप्त हुई। Yeah. And we get this help from the Lord. Everyone in Krishna consciousness get the help of the Lord. इस तरह का जो ऊपरी सहायता है सबको प्राप्त होता है, जो कृष्ण भक्ति में भगवान से प्राप्त होता है। Because according with Shastras, what you see, what you hear, what you talk, what you feeling, and also your whim are directed by the super soul. तो शास्त्र के अनुसार हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, सब कुछ What we hear, the word, what we hear, with the speak, with the thought, the feeling, and the whims, is direct by the super soul. तो हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं, ये सब परमात्मा के द्वारा निर्देशित है। When we realize at this point, we are really
completely in Krishna consciousness. इस बात को जब हम वास्तव में अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तब हम वास्तव में कृष्ण भक्त चेतना में हैं। Because we realize we depend completely of Krishna. उस अवस्था में हम समझते हैं कि पूर्ण रूप से हम कृष्ण के ऊपर आधारित हैं। It's not anymore question of false ego. उस समय कहीं मिथ्या अहंकार में कोई प्रश्न नहीं है। Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvachaha ahankara vidmudanma kartaha miti manyate. It's always the false ego make confusion in everyone. प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वत्र अहंकार पूर्ण आत्मा करता है। केवल मिथ्या अहंकार के कारण जीवात्मा अपने आप को करता मानता है। And there is the false ego is there. It's in the subtle. In the problem is always in the subtle body. समस्या हमेशा सूक्ष्म शरीर में होता है, जहाँ पे अहंकार बैठा है। Because the mind and the material intelligence carry the false ego. Carry. मन और बुद्धि जो है मिथ्या अहंकार को बढ़ावा देते हैं। So as stated in Srimad Bhagavatam 1, 2, 17, Srimvatasva Katha Krishna Punya Saravana Kirtana Vididantastohi Adrani Vidunoti Suritsatam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul, in every heart and the benefactor of the truthful devotee, clean desire for material and enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. भागवतम में कहा गया, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, शन्नतां स्वततां कृष्ण पुण्याः श्रवण कीर्तनः नित्यं यपत्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। भगवान श्री कृष्ण जो कि हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और सच्चे भक्त का उपकार करने वाले हैं, उस भक्त के हृदय की भौतिक भोग की इच्छा को मिटा देते हैं, जो उनके ऐसे संदेशों को सुनने के लिए उत्सुक है, जो ठीक से सुनने और उच्छलित होने पर स्वयं वैभवशाली होते हैं। Yeah. When the devotee is sincere and fixed, Krishna remove the guna influence. इस तरह से जब भक्त श्रवण करते हैं और गुणगान करते हैं भगवान का, तो भगवान गुणों का प्रभाव है भक्त के ऊपर से हटा देते हैं। Because he is the Guneshwara. Krishna is Guneshwara. Guneshwara means the Lord of the gunas. He is the Lord of the gunas. कृष्ण है वो गुणेश्वर है, तीन गुणों के ईश्वर आदिश्वर है, इसलिए वो हटा सकते गुणों का प्रभाव को हटा सकते। And also when the devotee is sincere, according with the Bhagavatam, when the devotee is sincere, the Upananda is one name of Krishna also. Upananda, he ordained the Maya Devi to delete this material desire. तो जब भक्त भगवान देखते हैं कि भक्त प्रामाणिक है, तो वो उपनंद को बताते हैं कि माया देवी का जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो सबको हटाया जाए भक्त के हृदय से।
So we come in the International Society for Krishna Consciousness with material desire. We come from outside. But after 10 years, 20 years, this material desire is no anymore. शुरुआत में हम लोग भौतिक इच्छाओं से भक्ति में आते हैं, किंतु 10, 20, 15 साल ऐसे करते भक्ति करते करते धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं चली जाती हैं। By the mercy of the Lord. ये भगवान की कृपा से ही होता है। A person try to be perfectly Krishna consciousness by hearing the word of Krishna from Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, certainly as all the dirty thing cleaning from his court of his heart. जो व्यक्ति भागवत गीता और भागवत से भगवान के गुणों के विषय में सुनते हैं, निश्चित रूप से उसके हृदय में जो कल्मश है वो दूर हो जाता है। So other way, the guna is always in competition between them. नहीं तो ये गुण आपस में हमेशा स्पर्धा में रहते हैं। And this competition touch the subtle body of everyone. Here is in Bhagavad Gita something about. तो ये जो गुणों के बीच में जो स्पर्धा है, वो Competition. स्पर्धा जो है वो जीव के सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करती है। On the 14th chapter Bhagavad Gita, the three mood of material nature. भगवत गीता के 14वें अध्याय के Text 10. 10वें श्लोक है। Rajatama Chavibhuya Sattvam Bhavati Bharata Rajaha Sattvam Tamachaiva Tamas Sattvam Rajutata. Sometimes the mood of goodness become prominent, defeating the mood of passion and ignorance, O son of Bharat. Sometimes the mood of passion defeats goodness and ignorance, and at other time, ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. भगवद गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा, रजस तमः चाविमयः सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमः तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी रजोगुण और अज्ञान के गुणों को हराकर अच्छाई का गुण प्रमुख हो जाता है। कभी कभी रजोगुण अच्छाई और अज्ञान को परास्त कर देता है, और कभी कभी अज्ञान अच्छाई और जुनून को हरा देता है। ऐसे में हमेशा वर्चस्व की होड़ मची रहती है। In the purport, Srila Prabhupada writing, when the mood of passion is prominent, the mood of goodness and ignorance are defected. Purport. जब रजोगुण की विधा प्रमुख होती है तो सत्व और तमो के गुण नष्ट हो जाते हैं। जब सत्वगुणी की प्रधानता होती है तब रजोगुण और अज्ञान का नाश होता है। When the mood of goodness is prominent, passion and ignorance are defected. And when the mood of ignorance is prominent, passion and goodness are defected. This competition is always going on.
Therefore, one who is actually intent on advancing in Krishna consciousness had to transcend these three moods. अतएव जो कृष्ण भावना बोध में वास्तव में उन्नति करना चाहते हैं उन्हें इन तीनों गुणों को लाना पड़ता है. The prominence of some certain mood of nature is manifested in one dealing in his activity, in eating, etc. प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य की आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है. Yeah, because there is different food in different mood, different mood. Yeah. अलग-अलग गुणों में जो भोजन है अलग-अलग तरह से होता है. And the most of people don't know that. ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता. So then eating sin. इसलिए वो पाप खाते हैं. All this will be explained in later chapters. ये सब बातें आगे Prabhupada say. के अध्याय में. But if one want, he can develop by practice the mood of goodness and thus defect the mood of ignorance and passion. लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है. One can similarly develop the mood of passion and defect goodness and ignorance. इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सत्वगुणों को परास्त कर सकता है. Or one can develop the mood of ignorance and defect goodness and passion. अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सत्वगुण को परास्त कर सकता है. Although there are the three moods of material nature, if one is determined, he can be blessed by the mood of goodness, and by transcending the mood of goodness, he can be situated in pure goodness, which is called the Vasudeva state. A state in which one can understand the science of God. यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लाभ कर शुद्ध सत्व में सत्वगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है. By the manifestation of particular activity, it can be understood in what mood of nature one is situated. विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है. The devotee can see many times in which mood is other person, in which influence he has. भक्त देख सकता है कि व्यक्ति के कार्य से कि वो कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है. Chaitanya Mahaprabhu also said, Chetodarpana Marjanam, the process of hearing and chanting the glory of the Supreme Lord wash away the dirty thing accumulate in the core of the heart. चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हृदय में स्थित जो कलमश है व्यक्ति भगवत भक्ति से हरिनाम लेने से साफ कर सकता है. As soon as one is free from all the dirty material contamination, as Maharaj Yayati was, one original position as an associate of the Lord is revealed.
भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे चाहें तो किसी की तुरंत उद्धार कर सकते हैं और भगवान विष्णु या कृष्ण को तो तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है यदि हम ये याति की भांति भगवान के आदेशों को मानकर उनकी शरण ग्रहण करें. This is called Svarupa Siddhi, or personal perfection. इसको स्वरूप सिद्धि कहा गया है. Yeah. So when one recuperate the Svarupa Siddhi, the original form of everyone, when one recuperate the Svarupa Siddhi, this is the really liberation, Srila Prabhupada say. जो व्यक्ति जब स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है वही वास्तव में मुक्ति है. Because there is different kind of liberation. But the real liberation is when one recuperate the Svarupa Siddhi. The real Svarup he get there in Vaikuntha. अलग-अलग तरह के मुक्ति है, किंतु वास्तविक जो मुक्ति है वो स्वरूप सिद्धि अवस्था को प्राप्त करना है. भगवान के धाम. In this moment there is not any more danger to come back here. उस अवस्था में भौतिक जगत में वापस आने का कोई संभावना नहीं है. Otherwise always some danger. नहीं तो हमेशा कुछ खतरा रहता है. We see some example in the Bhagavatam, the devotees who was in prema on Baba and then got problem. That is past time, but that is example. भागवतम में ऐसे उदाहरण है कि जो भाव की अवस्था में जाने पर के बाद भी व्यक्ति गिर सकता है वापस. वो उदाहरण है, लीला है, तो उदाहरण दिया गया. Chitraketu, he was in prema. Chitraketu, he was in prema, in the level of prema bhakti. तो चित्रकेतु महाराज का उदाहरण है जो प्रेम भक्ति के स्तर में होते हुए पतन. But by one mistake, he born again. एक गलती के कारण उनको दोबारा जन्म मिला. Yeah, even he was in prema. प्रेम के स्तर में होने पर भी. So Bharat Maharaj also, he was in Bhava. भरत महाराज का भी उदाहरण है जो भाव के स्तर पे. And by one attachment, he born like deer. थोड़ा सा आसक्ति के कारण दोबारा उनको तिरंग के रूप में जन्म. That is to this history make understand is always danger in the material world. ये सब से हमको शिक्षा मिलता है कि भौतिक जगत में हमेशा खतरा बनी रहती है. But when one recuperate the Svarupa Siddhi, there is no any more problem. किंतु व्यक्ति जब स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद कोई खतरा नहीं होता. This is Svarupa Siddhi is eternal. This Svarupa Siddhi is eternal. ये जो स्वरूप सिद्धि है ये शाश्वत है. There is no any more guna. उसके बाद कोई गुणों का प्रभाव नहीं है. In reality, the Prakriti, from the beginning, the Prakriti become divided in three guna. शुरुआत से ही प्रकृति जो है तीन गुणों में विभाजित है. And when it's divided in three guna on the beginning, when he's divided in three guna, become action. तो ये तीन गुणों का विभाजन है, बाद में वो कार्य परिणत होता है. It's always the guna, but we are identified with the matter, with the mind. But it's always the guna who act. Who act is the guna. It's not the soul. वास्तव में जो कार्य करते हैं भौतिक जगत में वो सब प्रकृति के गुण कार्य करते हैं. आत्मा केवल एक साक्षी है. I think on the 514, I think. Can you see? 514, I think there is explain about something. 5.
Yeah, 5:14. Narkatrivana karmani lokasya srijati prabhu. Na karma pala samyoga svabhavatu pravartate. The embodied spirit, master of the city of his body, do not create activity, nor do he induce people to act, nor do he create the fruit of action. All this is enacted by the mood of material nature. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। Yeah. The embodied spirit is the soul. The embodied spirit is the soul. But the soul do nothing. It's the gunas who act. It's always the guna. वास्तव में जो देहधारी जीव कार्य नहीं करता है, तीन गुण प्रकृति के गुण ही कार्य करते हैं। Yeah. Because the influence of the guna touch the mind, the mind become responsible of all activities. क्योंकि चेतना जो है वो इन गुणों के संपर्क में है, इसलिए इनके कार्य इससे प्रभावित होता है। That is science. Science of self-realization. And when we realize this point, especially this slok just now we read, we appreciate more and more the activity of the Lord, because everything is the mercy of the Lord. This I do, I will do, I did. This is not the real, the right, and it's not the prati Buddha. Prati Buddha means the perfect understand. It's not the practic Buddha. Prati Buddha. ये जो धारणा है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, ये जो मैं करता भाव है, ये वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति का ये धारणा नहीं होता। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some question. He is asking that sometimes when some service is given to devotees, they say that we don't have time. So Sometimes the service of devotee. Sometimes some service is given to some devotee, and they say we don't have time to do this service. So is this mode of nature acting? You give service for other devotee. And the devotee say I don't have time. So is that? Yeah. Yeah. Srila Prabhupada says this is the sickness of Kali Yuga. I have no time. तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये मतलब कलयुग का लोगों का बीमारी है कि मेरे पास सेवा के लिए समय नहीं है। Yeah. If he is in Rajoguna, even if you preach in him, he cannot understand, because in Rajoguna you cannot understand. ऐसे लोग ज्यादातर रजोगुण में होते हैं और
करने समझाने से भी वो समझ नहीं पाते। Yeah. So you cannot push. हम ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करते। Yeah, cannot push. Krishna deal with what is round. Krishna deal with what is round. You understand? कृष्ण deals With what is round. To what is round. Krishna deal to what is round. कृष्ण deals with what is good. Round. No, bad. Wrong, okay, wrong. Bad. You give one instruction to the devotee, he say, I have no time. What he say? Round. He don't follow. No? Round. It's in English, round. Wrong. Krishna deal with what is wrong. तो भगवान तो देख लेते हैं, जो गलत कार्य करता है तो उसको भगवान उसके लिए जैसे मना करता है सेवा से, तो फिर भगवान उनके साथ। Every devotee must to know this concept. Krishna deal what is wrong. Everyone must to understand that. तो हर एक भक्त को जानना चाहिए कि भगवान गलती को सहन नहीं करते, तो गलती के भगवान को उसके लिए निवारण करते। This instruction of Srila Prabhupada must to be there permanently, for always. Krishna deal with what is wrong. तो ये जो है हमारे हृदय में हमेशा ये शाश्वत सत्य है कि कोई भी गलती है वो भगवान उसको उसके साथ जो है सही व्यवहार करते हैं, जो भी गलती करते हैं तो दर्द देते हैं। One time, in one temple somewhere in America, there was one sannyas in charge. I don't want to give name of the sannyas. One Prabhupada disciple, he was in charge there. तो एक विदेश के मंदिर में सन्यासी प्रभुपाद के शिष्य वहाँ के इंचार्ज थे। But he was not the temple president. He was just in charge. तो वो मैनेजर के रूप में थे, प्रेसिडेंट नहीं थे। There was one grihastra and in president, temple president. तो गृहस्थ जो है वो अध्यक्ष थे, टेंपल प्रेसिडेंट। And one day, one Mataji Japanese come in the temple, and she say, I want to stay here. I read some book, and I want to stay here. तो एक दिन एक जापानीज माता जी आके बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ मंदिर में रहना है। And this Japanese Mataji was the one very, very rich family in America. तो ये Japanese family. माता जी है वो बहुत Yeah. अमीर घर की बेटी थी। Yeah. And she gets friendship with the temple president. तो प्रेसिडेंट के साथ वो मित्रता उसने कर ली। And the temple president become attached with this relation. तो मंदिर का प्रेसिडेंट टेंपल प्रेसिडेंट वो इसके आसक्त हो। But one day devotees saw in the freezer was one chicken. तो भक्तों ने फिर देखा कि फ्रिज में एक दिन मांस था, मुर्गी का मांस था। So devotee asked, who put this chicken in the freezer? तो आश्चर्य हुआ, किसने यहाँ पे फ्रिज में मांस? And this Mataji, she say, I purchased this chicken because the doctor told me I have to eat that, for that reason, and so I will cook this for myself. तो उसने अलग-अलग कारण बताया कि मेरे लिए ये सब जरूरी है, मांस खाना जरूरी है। तो जापानीज औरत। So there was commentary in the temple, devotees said what to do, no?
And then consulted the sannyas, who was the Prabhupada disciple who was in charge. तो सब भक्तों को पता नहीं चला कि यहाँ क्या करना चाहिए। फिर वो सन्यासी से उन लोगों ने सलाह ली। And the sannyas don't say anything. Hare Krishna. Don't say anything. वो सन्यासी ने कहा कि आप कुछ मत कहिए। Yeah. Then don't say anything. So the devotees, after 2-3 days, insist again. Hey, every day she cooking chicken. तो ये रोज का बात हो गया, रोज वो मांस पका रहे थे। Yeah. And there was what big confusion. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा Haribol, Baitod. You understand? वहाँ बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए। And after some time, this Japanese Mataji took the luggage and go away and disappear. तो कुछ समय के बाद ये माता जी अपना सब सामान लेकर चली गई। Yeah. So when Prabhupada came in this temple, all the devotees go to complain because this sannyas, he don't say anything. He saw she bring every day on the how do you say, chicken. She bring every day chicken. She cook every day, and he don't say anything. Everybody complain against this sannyas. तो फिर सब भक्त जाके जब श्रील प्रभुपाद वहाँ आए तो सब भक्त आके वहाँ पे वो सन्यासी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करने लगे। So Srila Prabhupada called the sannyasi तो श्रील प्रभुपाद ने वो बुलाया उस सन्यासी को and he asked, why you don't act, you don't do anything. तो उन्होंने पूछा कि आपने क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया उस पर। And the sannyasi, he said, I thought very much about this problem, but because the temple president was very attached with this lady, I understood Krishna deal with what is wrong, and I don't do anything. I let Krishna arrange the situation. मैंने देखा कि जो अध्यक्ष है मंदिर के वो स्त्री से आसक्त है, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। And after some time, the lady left the temple. तो आपने आप भगवान की योजना से वो स्त्री वहाँ से वो छोड़ के चली गई। So Srila Prabhupada called the devotees and say, you have not to criticize again the sannyas, because what he do was very intelligent. Krishna deal with what is wrong. तो फिर भक्तों को बुला के प्रभुपाद ने कहा कि उस सन्यासी में आप दोबारा निंदा मत करो, उसने जो किया है वो बहुत बुद्धिमानी करता है, क्योंकि वास्तव में कृष्ण सब व्यवस्था करते हैं। This history is not in the Bhagavatam, but in the Bhagavatam we find Krishna deal with what is wrong. Prabhupada writing, when there is something wrong, the devotee don't take that very serious, because the devotee know Krishna deal with what is wrong. ये बात भागवत में कहीं तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि जब कोई ऐसे दुर्घटना घटती है तो भक्त उसको ज़्यादा हृदय पे नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो है जो भी समस्या है गलती है उसको भगवान सुधार देते हैं। And this concept is very important. Everybody must to understand, because sometimes, like you say, you give some service for some devotee, and he say, I have no time.
So what you do in this moment? Okay, Krishna deal with what is wrong. तो उस समय आप You cannot push him. जैसे यहाँ पे उन्होंने प्रश्न किया था, तो अगर भक्त कोई सेवा देना नहीं चाहते इत्यादि या कोई भी इस तरह का समस्या आता है, तो आपको समझना है कि कृष्ण जो है वो ये समस्या का हल निकाले। When I read this instruction from Srila Prabhupada, my life changed. तो ये जो उपदेश जब मैंने इसका प्रॉपर पढ़ा तो मेरा जीवन जो है बदल गया। Because I start to see from other point of view. मैं दूसरे दृष्टिकोण से सबको देखने लगा। So before to push someone, you must to think about. The best thing is you inform it. You inform the authority and you say he don't want to do this service. But you must to do that with detachment. तो ऐसे सबसे सामान्य सा हाल है कि आप जो अधिकारी हैं उनको आप बता सकते हैं कि इस तरह से है अवस्थिति। Srila Prabhupada ki jai, Radha Srimad Bhagavatam ki jai, Thai Gaur Premanande. Thank you for your attention. Hare Krishna. Krishna deal with what is wrong.